Good morning students, I hope you all are doing well. My name is Kanika and in today's class we are going to further discuss various other basics of Python. So let's start the video. So today we are going to talk about control statements. Now what are control statements? Control statements are used to control the flow of the execution depending upon the specified condition or logic. Used to control the flow of execution. Flow of execution mean कैसे काम हो रहा है उसका execution that is controlled and specified under a defined condition or logic is done using control statement. So there are basically three types of control statement. First is decision making statement, iteration statements and jump statements. Let's discuss them one by one. So the first one is decision making statement. Decision making statement used to control the flow of execution of program depending upon the condition. That means it checks the condition whether this or that. If this condition is fulfilled, then I will do this. If it is not, then I will do that. For example, if I wake up in the morning and I am feeling hungry, so I will immediately have my breakfast, and if I am not feeling hungry, I may have my breakfast after 2 hours or 3 hours, right? So this is what conditions you apply, and then according to those conditions you perform the task. Similarly, this is what is done in decision making statements. We have three types: if else and nested if else. First one is if statement. Now you can see in the diagram, I start with the program and checks the condition. If it is true, it goes into the code and perform the task. And if it is false, it directly comes out of the loop and comes out and ends the program. So an if statement is a programming condition statement that if proved true performs the functions or displays information. अगर true हुआ, then it will perform the desired information. Next we have an example of if statement. This is a syntax. You can see if you provide condition then statements, right? For example, if number of books is 2, print you have, print 2 books, print outside of if statement. So output will be you have 2 books, and also this will be printed. It's missing over here. This line will also be printed outside of its book. Okay. So you need to follow indentation, right? As you can see, I have started from here, then I have moved to a little right, then to a little right, and then back to left. So what does this mean? That these two statements are to be followed if if this statement is true, right? And this then comes out, that means it is not a part of if statement. मतलब कि ये दो जो lines हैं, ये मेरा if part का जो स्टेटमेंट है, इफ कंडीशन अगर ट्रू हो जाती तो मेरे को परफॉर्म करनी है, और ये वाली स्टेटमेंट इफ कंडीशंस का, इफ स्टेटमेंट्स का पार्ट नहीं है, ये परफॉर्म होगी ही होगी इफ जब मेरा पूरा फ्लो कंट्रोल जब उसके अंदर पूरा काम हो जाएगा. So indentation refers to the space at the beginning of a code line. So in Python we need to give this beginning of the code line. Next is if statement. So using logical operator in if statement. For example, if I have given x is equal to 1 and y is equal to 2. So if x is equal to 1, that means and y is equal to 2. अगर x की वैल्यू 1 है and y की वैल्यू 2 है, ठीक है, तो ये भी ट्रू है, x की वैल्यू 1 भी है, y की वैल्यू भी 2 है, ये भी ट्रू है. So true and true gives me true. So this statement is true. True हो गई if statement, so it will print condition matching the criteria. Similarly, a is equal to 100. If not, a is equal to 100. A is not equal to 20. That means a की वैल्यू अगर 20 है, तो if not कर दिया मैंने, a की वैल्यू 20 नहीं है, a की वैल्यू क्या है 100 है, a की वैल्यू 20 नहीं है, तो ये false हो गया. लेकिन मैंने उसको not कर दिया, तो false का not क्या होता है, true. तो ये हमारी a is not equal to 20 प्रिंट कर देगा वैल्यू, क्योंकि ये ट्रू हो गई इफ स्टेटमेंट. ओके, वन होमवर्क फॉर यू विल बी in the doubt session. I will ask this: what is the difference between this single equal to and double equal to? Why I have used here double equal to and here I have used single equal to? I will ask in the doubt session. Be ready with your answers.
Next we have if-else statement. If-else statements, if this a statement comes in, it checks the condition. If it is true, then body of it is performed. If it is false, then आप उसमें कुछ और काम भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि वो सीधा एग्जिट ही कर जाए, राइट? अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं है, आप उसका कुछ और उसके लिए एग्जीक्यूट करा सकते हो, एंड देन योर एग्जीक्यूशन कैन कम टू एन एंड. So if else statement execute same code if text expression is true and some other code if the text expression is false. For example, here is the syntax: if condition statement, else condition statement. For example, a is equal to 10. If a is less than 100, print less than 100, else print more than equal to 100. So as you can see, a is less than 100. So if condition is true, so this will be printed. If I have given a is equal to 200, then else condition was true and this will be printed. So your task for this is to write a program in Python to check that entered number is even or odd. Next is decision making statement, that is nested if else. Nested if else means if else inside if else, if else inside if else, एक के अंदर एक. For example, as you can see, we have entered, then we have checked true or false. Then if it is true, I am checking the second condition, if it is true or false, or which condition to follow. If I want to follow statement 2 or statement 1, and then I comes to statement this x. So similarly false. So it is if else inside if else. It is multiple test expression and execute different code for more than 2 conditions. So here is an example of nested if else. If condition statement, elif. Elif means else if. Condition statement, else statement. For example, I have asked a user to input a value, enter a number. For example, the number which user has input is 5. Then I check if number is equal to 0, print 0, else print positive, else print negative. Okay? So this is how this performed. Else part is true, so we have printed print positive number. So you need to write a Python program to find out largest of the 3 number. So in this you have to ask user any 3 numbers, and in that you have to identify the largest number from these 3 numbers using nested if else. Okay. Next we have iteration statements. Iteration statements contain while, for and nested loop. Iteration statement means are used to execute a block of statement as long as the condition is true. जब तक वो कंडीशन ट्रू है तब तक वो लूप में चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, चलता जाएगा. ओके. वी आर यूज व्हेन वी नीड टू रन सेम कोड. कब यूज करते हैं इसको? जब हमें सेम कोड बार बार चलाना होता है. इंस्टेड ऑफ राइटिंग दैट कोड अगेन एंड अगेन, वी पुट दैट इनसाइड अ लूप, सो इट रन्स द कोड अगेन एंड अगेन. First we have while loop. It is used to execute a block of statement as long as given condition is true. So we give a condition in here and code is repeated until this condition holds true. The condition is checked every time at the beginning of the loop. Condition is checked, as you can see, starting में condition check करी जाती है. अगर starting में सी condition गलत हो जाती है तो ये कोड एक बार एग्जीक्यूट नहीं होगा. It is an entry level loop. Sometimes it is asked what is an entry level loop. So while is an entry level loop. So as you can see, enter the while loop text expression. If it is true, then again go into body of while and then perform the task until it's become false and exit the loop. As you can see, if x is equal to 1, so x को हमें while loop कब तक चलाना है? जब तक x की वैल्यू 4 से कम है. So print x 1. अब हमने यहाँ पे अगर x is equal to x plus 1, x की वैल्यू हम हर बार 1 से बढ़ा रहे हैं. तो जब तक x की वैल्यू 4 से कम है तब तक ये मेरी while कमांड चलती रहेगी, और जैसे ही वो 4 हो जाएगा, जैसे ही इक्वल टू 4 हो जाएगा तो वो कमांड रुक जाएगी. नेक्स्ट वी हैव while loop, continue while loop with else. For example, x is equal to 1, while x is less than 3, print inside while loop value of x. X is equal to x plus 1. So this is how while loop you can use with else statement, right? So once your while is concluded, जब आपका while का प्रोग्रामिंग खत्म हो जाएगा, it control will automatically come into else and फिर else part आपका चल जाएगा. So you have to write a program in Python to find out factorial of a given number. These questions which are coming in between are basic questions which you need to know. You all have done this question in class 11. So revising these concepts will give you a better idea of what we are going to study new in class 12. So do perform these questions which are coming in between. So we have while loop. Sorry.
So while loop, infinite loop. What happen? For example, if I give value x is equal to 5 and मैं कह रही हूँ जब तक उसकी वैल्यू 5 है उसको चलाते रहो. अब जब मैं यहाँ पे x की वैल्यू चेंज ही नहीं कर रही तो x values remain 5 all the time. So this will becomes an infinite loop. Infinite loops means it keeps on going and going and going without any stoppage because I have not given any condition. तो ये चलता ही जाएगा. It is called as an infinite loop. Next we have for loop. As you can see, it used to iterate over items for any sequence such as list or string. String और list को पढ़ने के लिए for loop use किया जाता है. And this is a syntax for val in sequence. We give a certain range, that is sequence, and certain variable. So write for I in range 3,5 print I. So print I till it is there. For I means जितनी इसके अंदर range के अंदर जितनी भी values है वो print करो. So 3 to 5, that means it will print 3 and 4. Next we have for loop continue. It is another example of for loop. Basically here we have a third parameter, that is -1. Now 5 means starting the number. 5 stands for starting the number of the sequence. 5 से हमें start करना है. Then stop. Stop means generate number up to but not including this number. हमें 3 को include नहीं करना, but इससे पहले ही हमें इससे एक पहले हमें अपना काउंटिंग बंद कर देनी है. एंड स्टेप, दिस इज एन ऑप्शनल स्टेप. दी स्टार्ट एंड स्टॉप आर कंपल्सरी बट दिस इज एन ऑप्शनल स्टेप, दैट इज -1. So what it is doing, it is determines the increment between each number in the sequence. कितना हमें उसको add या subtract करना है. Here I have given -1, so first number is added 5, and in the next iteration it will be 5 minus 1, that is 4, and here the loop will stop. Next we have for loop continue with else. Now here we can also write else after for loop. Now what happens after executing for, else will be executing, else will be executed. But when will else will not be executed? If break is used inside the loop, then else will not be executed. अगर मैंने इस for के अंदर कहीं पे भी break use कर लिया, then else will not be executed. It will directly come out from the loop and goes to the next command, which is next command to the else. Okay. Now what is break? Break is a keyword which can be given inside loop anywhere and it will break the loop. For example, if I give break command after print I, I give break command, what will happen? It will print just only 1. It will not print 2, 3, 4 and no break. It will just print 1 and break. Break लगना मतलब you all know, तोड़ देना बीच में, and it will control will come out of the for loop and उसके बाद वो for loop चलेगा नहीं, वो सीधा बाहर उसका control आ जाएगा for loop से. Okay. Next we have nested for loop. Similar to if else, we have for loop. Now let's try to understand this program. For I in range 1 to 3, for j in range 1 to 11. So what happens? I is equal to 1, then it goes inside the loop. J is in range 1 to 11. So first we have j is equal to 1, then we form k is equal to I into j, that is 1 into 1. Then print the value k, that is 1. Now we are inside the for loop of j. We are inside the for loop of j. So now j value will increment to 2 and I will remain 1. Okay. j की value increment होगी, I की value 1 ही रहेगी. Now I will be 1 and j keeps on changing up to 11. Changing और increment होता रहेगा वो एक नंबर से. So अब क्या होगा? Next क्या होगा? 1 into 2, 2, 1 into 3, 3, 1 into 4, 4, 1 into 5 and so on. जब ये 10 तक चला जाएगा तब ये वाला लूप j का बंद होगा एंड देन कंट्रोल विल गो बैक टू फॉर i इन रेंज. फिर कंट्रोल कहाँ आ जाएगा? इस i वाले लूप फॉर लूप के पास कंट्रोल आ जाएगा एंड मेरी तब i की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2. एंड देन फिर हम इसके अंदर आ जाएंगे. देन 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, 2. देन j विल इंक्रीमेंट 2, तो 2 2s are 4, will 3, 2 3s are 6 and so on till 10. So this is how this loop will work. Next we have jump statement. Now jump statements are used to transfer the program control from one location to another. Sometimes I don't want my loop to execute my loop all together. I want, जैसे मैंने कहा कि 1 to 100 तक I need to read the number, but I want to add in condition कि अगर 50 तक हो गए हैं
तो मैं ब्रेक करना चाहती हूँ, मैं 100 तक काउंटिंग नहीं करना चाहती, तो आई कैन जस्ट ब्रेक द लूप इन बिटवीन, राइट. Means these are used to alter the flow of loop, change the flow of loop, to skip a part of loop or terminate a loop. You can skip a part of loop or terminate, that means end the loop. So there are 3 jump statement: break, continue and pass. Break, as I told you earlier, break, if you give break inside a loop, it will stop the loop there and then only, and it will come to the end. As you can see, we are reading the value of s string, right? So if value जैसे ही i पे आ जाएगा, मतलब जैसे ही वो i पे आ जाएगा तो ब्रेक कर दो उसको, वो ब्रेक कर देगा, फिर प्रिंट कर देगा वैल्यू str और ब्रेक हो गई, और वो फिर सीधा बाहर आ गया दी एंड. उसने ing को ब्रेक नहीं, को रीड नहीं करा, को प्रिंट नहीं करा. क्यों? क्योंकि उसने बोला जैसे ही आई हो जाए वैल्यू तब ब्रेक कर देना, तो वो लूप के बाहर आ गया. नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यू. कॉन्टिन्यू मीन्स it used to skip all the remaining statements in the loop and move control back to the top of the loop, right? Continue, as you know, continue means चलता रहेगा, कोई काम रुकेगा नहीं आपका. So if you don't even give this loop, so it will continue. For example, अगर init के अंदर जैसे ही आएगा तो आप continue करोगे. Continue, जैसे पहले उसने रीड करा I, so continue. So you will print the value n. फिर n आया तो कंटिन्यू. कंटिन्यू का क्या मतलब है? जैसे यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे इफ वैल्यू इज इक्वल टू आई, जैसे ही आई होगी तो कंटिन्यू. कंटिन्यू आने के साथ ही वो दोबारा से यहाँ कंट्रोल चला जाएगा. फिर उसने क्या रीड करा? एन. कंटिन्यू का मतलब क्या है? वो बैक टू लूप ले जाता है उसको आगे एग्जीक्यूट नहीं करने देता, उसको सीधा कंडीशन के पास ले जाता है कि वापस मैं पकड़ के कंडीशन पे ले जाऊंगा. तो एट आई पे आया, अगर वैल्यू आई है तो कंटिन्यू करना है, तो वो वापस चला गया. फिर एन आया, एन इज नॉट वैल्यू, आई नहीं है एन है, तो वो प्रिंट कर दी उसने वैल्यू एन. फिर नेक्स्ट आया आई, इफ वैल इज इक्वल टू आई, तो फिर कंटिन्यू पे चला गया. आई उसने फिर प्रिंट नहीं करा. फिर टी आया तो टी आई नहीं है, तो इसलिए उसने उसको टी वैल्यू प्रिंट करने दी, और फिर लास्ट में ये दी एंड वाली स्टेटमेंट आपकी प्रिंट हो गई. Next is pass statement. This statement does nothing. It can be used when a statement is required syntactically but the program requires no action. इसको लगाने ना लगाने का कोई फर्क ऐसा पड़ता नहीं है. बहुत ही आपको कोई कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम है, जस्ट आपको यूज करना है, देन यू कैन यूज इट. सो इनसाइड लूप while true pass means busy wait for keyboard interrupt control C. So you can use them in higher examples, but it is of no use for us as a beginner. Then we have an example of pass statement. For example, for I in initial, if I is equal to I, अगर I की वैल्यू I है, that is यहाँ पे 3 I है, I initial के अंदर, so pass कर देगा वैल्यू. Now continues forces the loop to start at the next iteration, while pass there is no code to execute here and will continue through the remainder or the loop body. उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपने आप नॉर्मली कोड चलाता रहेगा, राइट? अगर I की वैल्यू आई हो गई तो वो पास कर देगा उसको नेक्स्ट में प्रिंट, उसको नेक्स्ट कमांड पे ले जाएगा. कंटिन्यू कर रहा था वो वापस फॉर पे लेके जा रहा था, लेकिन पास से कर रहा है उसको नेक्स्ट पे लेके जा रहा है, राइट? सो दिस वाज ऑल अबाउट द कंट्रोल स्टेटमेंट्स. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट. इफ यू हैव एनी डाउट, वी विल डिस्कस इन द डाउट सेशन, एंड प्लीज डू अटेंड डाउट सेशन टू गेट योर concepts more better and get a better understanding of things. Thank you.